which will slow. Good evening, everyone. We'll be commencing very shortly. Have far-reaching impact on charitable institutions, especially educational institutions and the institutions having general public utility as their objective. Supreme Court decisions are in itself considered as landmark judgments. The seminar will be followed by a Q&A session, so the participants attending remotely are requested to drop their queries on chat box available in the Zoom. Now, further without ado, we will turn the time over to Rajeev Sogani sir to explain us these judgments in detail. Good evening, everyone, and thank you very much, Nishita ji. I'm aware everyone is disheartened because of the defeat of India in the cricket match, and therefore I feel it is time to divert ourselves from the cricket. And I can assure you, these two Supreme Court judgments are no less thriller than any T20 cricket match. Friends, today we will be discussing two very important and very recent judgments delivered by Honorable Supreme Court. Both the judgments have been delivered on 19th of October 2022. And both the judgments are delivered by the same bench consisting of the then Chief Justice of India, UU Lalit, S. Ravindra Bhatt, and Justice Narasimhan. Both the judgments were delivered by this very bench, and both the judgments were authored by Justice S. Ravindran Bhatt. And these are very lengthy judgments. The one which is of New Noble is of 52 pages, and that is of Ahmedabad Urban Development Authority. That is of 142 pages. And I must admit that both the judgments have been very nicely written. The articulation of the Honorable Judge S. Ravindran Bhatt has been extremely well. I may not, or we may not agree with the underlying ideology or the underlying principle laid down or the ratio laid down, but definitely the articulation of these judgments is excellent. And I can say that both the judgments will have far-reaching impact both on charitable institutions which are imparting education and charitable institutions which are involved in any other object of general public utility. And friends, before we discuss the two judgments, I will take you briefly through the relevant law so that we can understand what exactly the impact will be of these two Supreme Court judgments.
We will discuss in brief section 1023C6. It must be on your screens. Section 1023C6. This judgment the first section which the first judgment, that is judgment of new noble, has discussed is with reference to section 1023C6, which is for educational institutions, and it provides that any university or other educational institution existing solely for educational purposes and not for purposes of profit. So these two phrases are very important: existing solely for educational purposes and not for purposes of profit. These have been explained, and these have been explained in a manner which has reversed the hitherto existing interpretation of these two terms or this very phrase contained in section 1023C6. Now, the second section is section 215, which is charitable objects, which is defined in section 2, subsection 15. That is also important. I'll take you through the judgment, section very briefly. The section says charitable purpose includes relief of poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment, and preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest, and the advancement of any other object of general public utility. So we have two portions of this definition of charitable purposes. The first portion consists of certain specific activities. Those specific activities per se are held to be charitable, and there is no restriction other than the particular entity is required to undertake those activities. That is, if a particular entity is imparting education, that is per se a charitable activity. And the second part is a residual clause, which says the advancement of any other object of general public utility. It is of wide importance because those specific terms are defining specific activities, and this is a residual clause where any activity which is in the interest of general public, that is called general public utility, we will call that GPU. And then GPU activities are also charitable activities. For example, Gaushala is not covered in any of the earlier specific activities. That is, Gaushala is not neither relief of the poor, nor education, nor yoga, nor medical relief. Therefore, Gaushala will fall in any other object of general public utility. Dharamshala will fall in any other object of general public utility. You must have also seen a charitable organization in the name of Jago Grahak Jago, that is Pragati Kurz. So all these are any other object of general public utility, and in this residual phrase, in this residual clause, fall all the trade associations or the trade bodies like CII, FICCI, Rajasthan Chamber of Commerce and Industries, or the Stonecraft. Presently, Jaipur is hosting one trade fair, which is hosted by Stonecraft. So all these trade bodies are also charitable organizations, and they are pursuing any other object of general public utility. So the second judgment, that is of Ahmedabad Urban Development Authority, that is related to this residual clause, which is general public utility. Now, this general public utility has one rider, which rider is applicable only on this residual phrase and not on the earlier. It is not this provision which we are now reading is not applicable on educational institutions or the yoga or preservation of monuments or environment, etc., because those are specific activities. Now, this proviso is very important and will have far-reaching implication because a very new interpretation is given to this proviso by the Honorable Supreme Court in this Ahmedabad urban judgment. It says, provided that the advancement of any other object of general public utility shall not be a charitable purpose. So,
per se, any other object of general public utility is a charitable object, but there are certain conditions under which it will not be treated as a charitable purpose if it involves the carrying on of any activity in the nature of trade, commerce, or business. So if any entity is involved in any other object of general public utility, but it engages itself in any trade, commerce, or business, then that will not be a charitable object. Then there is some relaxation. Means this GPU entity can carry out trade, commerce, or business subject to certain quantitative limitations. These quantitative limitations are twofold. First is such activities undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility. So the first is these entities can carry out trade, commerce, or business, but they have to be in the course of actual carrying out those activities. And second quantitative restriction is that the aggregate receipts from such activity or activities during the previous year do not exceed 20% of the total receipts of that trust from such activities. So the friends, this is specifically the two sections. One is 1023C6 and second is section 215. That two particularly any other object of general public utility and the proviso thereof. And friends, at this stage, I also wish to explain you that the activity of education is overlapping. Education is falling in 1023C6 also, and it is also finding mention in the definition of charitable purpose, which is contained in section 2, clause 15. So education has both overlapping existence in section 1023C as well as section 215. And we will also understand whether under the present circumstances, it is better to avail the benefit or the exemption under section 1023C6, or it is better to avail the exemption under section 11 by recourse to section 215. That is also one decision probably some of the institutions will have to take. Now, friends, first coming to the judgment of Honorable Supreme Court in the case of New Noble Education Society. This is the judgment which was came before the Honorable Supreme Court by way of an appeal against the judgment of Honorable Andhra Pradesh High Court. Andhra Pradesh High Court gave the verdict against the assessee, and the assessee was in appeal before the Honorable Supreme Court, and Honorable Supreme Court upheld the decision of the Honorable Andhra Pradesh High Court. That is, the issue was decided in appeal against the assessee, and the assessee's appeal was dismissed. Now, in para 34 of the judgment, three specific issues were identified by the Honorable Supreme Court for its decision. These three issues are contained in para 34 of the judgment. The first issue was what is meant by solely. We have seen the definition, the law contained in section 1023C6, and there the word is education, existing solely for education. So the first issue was what is meant by solely, existing solely for education, what is meant by solely. That was the first issue. The second issue was the manner in which the profit gain or surplus is to be considered when the profit gain or surplus arises to such charitable institutions. So what impact it has to be given, because we have seen in section 1023C6 it says that it should exist solely for education, and the negative injunction is it should not for the purpose of profit. So what is the real meaning of it should not exist for the purpose of profit? And the third issue which was considered and which is again very important is what is the scope of inquiry under section 1023C6 when the approving authority examines the application for approval under section 1023C6, and whether the requirement of the requirement of compliance of such other laws or such conditions of other laws which are material for the purpose of achieving the objects of the charitable institution.
because we have plenty of laws in our country. So the educational institution is required to abide by certain other legislations also, maybe the law contained in affiliation regulations, UGC approval, Central Board of Secondary Education approval, or the building laws, or the labor laws, or the UGC requirement of student-teacher ratio. So many other things are there which are in fact not governed by Income Tax Act, but those are governed by other various laws. So the scope of application of those laws was the third issue which was before the Honorable Supreme Court. Now, first coming to what is meant by existing solely for education. This was the conclusion or the real finding after articulating the subject very nicely. Honorable Justice S. Ravindran Bhatt has finally given a finding that solely means to the exclusion of all others. Solely previously was meant to be predominantly. Predominantly का मतलब ये है, मैं मानता हूं कि अगर हम क्वांटिटेटिव चर्चा करें तो अगर 50% से ज्यादा मैं एजुकेशन में हूं तो प्रीडोमिनेंटली मैं एजुकेशन में हूं, इसलिए मैं सोलली फॉर एजुकेशन में रहूंगा, ऐसा पहले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में कहा गया था। अभी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that solely means not predominantly but to the exclusion of all others. That is, if I am doing anything slightest other than education, then I am not existing solely for education. Then question also arises, what other activities which are incidental to education I am allowed to carry on, like hostel, like transportation facilities, like distribution of books or uniform, or having summer classes, or having coaching classes, or having even sports academies, etc. What other activities I am allowed when I am required to exist solely for education? So that was also an issue before the Honorable Supreme Court. The first issue Supreme Court decided that solely means to the exclusion of all other. Now, in the process, Honorable Supreme Court has reversed the earlier two judgments which were delivered by a smaller bench of Honorable Supreme Court. One judgment was Queen's Education Society, which judgment was delivered in the year 2015, and then another judgment was American Hotels Association. In both the judgments, the Honorable Supreme Court had held that predominantly would mean solely, or solely means predominantly, but the Honorable Supreme Court in this judgment has said, no, that law was wrongly laid down, and it has specifically mentioned in para 60 of the judgment that both these judgments are overruled by this judgment. Now, friends, I'll take you through some portion of the Queen's Education Society. Now, Queen's Education Society, जिसकी वजह से अब तक सारा लॉ, चाहे वो सेक्शन 215 के अंदर सेक्शन 11 में जजमेंट जो कुछ भी एग्जम्पशन अवेलेबल होता था उसका लॉ था, या 1023C का लॉ था, वो क्वींस एजुकेशन से गाइडेड था. That was driven, it was holding the field since 2015. और 2015 में इस जजमेंट का ब्रीफ फैक्ट ये है कि जो असेसिंग ऑफिसर था उसने पाया क्वींस एजुकेशन सोसाइटी के केस में ये पाया कि क्वींस एजुकेशन सोसाइटी को सरप्लस जनरेट हो रहा है. तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा that if any charitable organization generates surplus, then it ceases to exist solely for education, and thereafter it exists as an entity which is for profit earning. It becomes a profit earning entity. This was the judgment of the honorable of the learned AO. Assessing officer का मैटर ट्रेवल करके हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट था क्वींस एजुकेशन सोसाइटी का, हाईकोर्ट तक पहुंचा. हाईकोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर के व्यू को अपहोल्ड कहा और उन्होंने कहा कि यस, इफ इट इज प्रॉफिट देन it is not existing solely for the purpose of education, and therefore the exemption was rightly denied by the lower authorities. That was the judgment of the Uttarakhand High Court. But Supreme Court took a very pragmatic view. एक जिसे कहते हैं ना बड़ा लिबरल व्यू, और जो मेरी अपनी समझ है कि एक वास्तविक व्यू था, एक वास्तव में
प्रॉपर एक ब्रॉडर व्यू था, लिबरल व्यू था, प्रैग्मेटिक व्यू था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, the existence of surplus per se will not mean that it is not existing solely for education. Supreme Court said that these are not two mutually exclusive things. Supreme Court ne in the judgment of Queen's Education earlier had said that surplus, if the institution is existing solely for education, the predominant object is education. But even if surplus is generated in the process of, say, imparting education, it will not cease to exist solely for education. And in spite of the large quantum of profit, or in spite of the fact that the profits over the years are there, or the surplus is consistently there over the years, all these issues are immaterial. What is to be seen is whether the primary object is earning profit or primary object is imparting education. If primary object is imparting education, तो profit हो रहा हो, surplus हो रहा हो, year after year surplus हो रहा हो, surplus का quantum भी ज्यादा हो, that is not important. और Supreme Court ने ये भी कहा कि अगर वो surplus वापस education के advancement में लगा दिया गया है, तो फिर ये तय होता है कि again it is existing solely for education. So that was the previous view. लेकिन अभी Supreme Court ने इस view को reverse कर दिया है और पुराने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एग्जिस्टिंग सोली फॉर एजुकेशन विज़-अ-वी जनरेशन ऑफ सरप्लस को डिस्कस किया गया था। यहाँ पर इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑल टुगेदर नया डायमेंशन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि एग्जिस्टिंग सोली फॉर एजुकेशन का मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इम्पार्टिंग एजुकेशन और फैसिलिटेटिंग एजुकेशन, उस एजुकेशन के अलावा आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ भी नहीं होना चाहिए। If the entity is authorized by the objection clause to carry out any activity other than education, even if it is not doing, that will be rendering it ineligible for exemption under section 1023C6. Friends, definitely not under section 215 or section 11 because the term there education is a charitable object, वो अपन अलग से चर्चा करेंगे। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर जजमेंट जो है, जो न्यू नोबल सोसाइटी का, एजुकेशन सोसाइटी का है, इसको इन्होंने प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करा है। उन्होंने कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई नया कानून नहीं ले डाउन करता है, कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसकी विवेचना या इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करता है, इसलिए कानून जैसा शुरू से था वो ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके इंटरप्रिटेशन को फाइनलिटी प्रोवाइड की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्यू नोबल सोसाइटी वाले जजमेंट में ये कहा है कि प्रोस्पेक्टिव रहेगा क्योंकि उन्हें मालूम, उन्होंने लिखा है कि हमने एक सेटल्ड प्रोपोजिशन को रिवर्स किया है और जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको समय मिलना चाहिए कि वो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉजेस को चेंज कर सकें अगर उनके ऑब्जेक्ट क्लॉजेस के अंदर किसी भी तरह से अदर देन एजुकेशन है। सो द फर्स्ट थिंग, अपने को बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिविटीज विच आर इंसिडेंटल टू एजुकेशन और विच आर नेसेसरी फॉर इम्पार्टिंग और फैसिलिटेटिंग द एजुकेशन एक्टिविटीज, उन पे कोई प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में एग्री किया है न्यू नोबल में कि क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, हॉस्टल कर सकते हैं, बुक्स की सोर्सिंग कर सकते हैं। यूनिफॉर्म की बात नहीं की गई है स्पेसिफिकली। आई एम नॉट अवेयर व्हाट डिपार्टमेंट विल टेक इंटरप्रिटेशन, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप इसके अलावा जो एजुकेशन के लिए अनिवार्य नहीं है ऐसी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं तो इट विल बी टेंटामाउंटिंग टू योर एग्जिस्टिंग नॉट सोनली फॉर एजुकेशन। और इसका मतलब ये है कि हमें समझना पड़ेगा, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर आप अपने कोई समर कैंप कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कोचिंग कैंप्स कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अपने स्टूडेंट्स के अलावा बाहर वाले स्टूडेंट्स को भी आप अलाउ कर रहे हैं ऑन अ फीस, then it is not imparting education. It may be surprising to us, but this is what we have to accept. That is, yes, this is the law. We are there to abide by this law and manage our activities in such a manner that we don't violate what is the principle laid down by the Honorable Supreme Court. Now, friends, therefore, the question arises कि ऐसी educational institutions जो 1023C6 में exemption ले रही हैं,
उन्हें अपनी सारी ऐसी अर्निंग्स को बंद करनी पड़ेंगी जो अदर देन एजुकेशन से हैं। वो अगर अपने यहाँ पर कोचिंग क्लासेस चला रही हैं जिसमें बाहर के स्टूडेंट्स हैं, अपने यहाँ पर मान लीजिए बहुत बहुत सारी एक्टिविटी होती है, आई डोंट नो, मान लीजिए वहां पर बैंक चल रहा है और बैंक से रेंट आ रहा है, वेदर it is very difficult. The department will say it is not necessary. Having a bank in your own premises is not at all necessary. Therefore, you are involved in activity other than education. आपने मोबाइल टावर छत पे लगाना अलाउ कर दिया, उसका रेंट आ रहा है, that is definitely the department would say. And friends, the conflict will now start. The assessees will interpret the Supreme Court judgment differently, and the department will interpret the judgment very differently and just reverse. दोनों में अब वो इंटरप्रिटेशन के इश्यूज अराइज होंगे। तो अगर मोबाइल टावर से कोई आमदनी हो रही है और 1023C6 में हम हैं, दिक्कत होगी। आप लोग देखते होंगे कि सब जयपुर में भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेट आउट कर देते हैं। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे मालूम है कि सीए इंस्टीट्यूट के सारे एग्जाम्स तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही होते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो हायर करते हैं फॉर कंडक्टिंग एग्जाम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि ऐसी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो सोनली फॉर एजुकेशन से बाहर हो जाएंगी एंड दैट विल बी वॉयलेटिव। और तो और साहब जयपुर में in particular I find that lot of educational institutions, particularly समाज द्वारा जो संचालित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सुबोध ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हो, महावीर स्कूल हो, महेश्वरी स्कूल हो, इन सब के अंदर समाज की टीए की बैठकें होती हैं एंड दैट इज फॉर श्योर सम चार्ज होता है उसका। मेरा मानना है वो अगर सेक्शन 11 का बेनिफिट ले रहे हैं तो इशू थोड़ा डिफरेंट है, then they are not governed by New Noble Education Society and the other implications would be there, they would be hit by the judgment of Ahmedabad Urban, because in that case they will be carrying out education and another activity which is any other object of general public utility. In that case they will be pursuing twin objects, so that is a different issue. But if they are availing exemption under section 1023C6, they should be careful. They should stop all these activities. Otherwise, department will definitely withdraw exemption or stop allowing them the exemption under section 1023C6. So we have understood the incidental activities which are allowed and the incidental activities which are not allowed. Yes. गवर्नमेंट खुद फोर्स करती है सर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। Not only this, अभी कोरोना में फोर्स किया कि साहब आपको स्कूल्स देने पड़ेंगे। कई बार ये होता है कि चुनाव होने हैं तो स्कूल में होने हैं। देखिए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देखिए इस सुप्रीम कोर्ट ने जिन सवालों का जवाब दिया है उससे बहुत ज्यादा सवाल खड़े हैं, तो ये समस्या आएगी। लेकिन अभी जो आज का डिस्कशन का पर्पस है वो ये है कि हम इस कानून की मतलब इस जजमेंट की खामियां निकाल करके कुछ नहीं हासिल करेंगे, क्योंकि अभी ये लॉ ऑफ द लैंड है जो प्रोबेबली आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज लॉ ऑफ द लैंड, वी आर बाउंड टू अबाइड बाय दिस अनलेस it is differently interpreted subsequently by some other judgments of High Court or even by the Supreme Court, which happens, or there is a review petition of these judgments and the Supreme Court refers it to even a larger bench, which is looks like unlikely. I am not aware of all those procedures in the Supreme Court, but till that time we will have to abide by this, and within this probably ऐसे जब फोर्स वाले काम हैं तो मैं मानता हूँ कि डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट फोर्स खुद आगे होकर के ये काम कर रही हैं वहां ये दिक्कतें आने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सोलरी, वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द मीनिंग और द एक्टिविटीज व्हिच आर incidental and which are not, Supreme Court has said, incidental. Now the second issue, the manner in which the surplus is to be treated for the purpose of assessment, now that is also discussed. Now fortunately Supreme Court in para 76 of the judgment has said that earning surplus in 1 year or set of years per se cannot be a reason for denial of exemption. So this is a happy situation. At least जो Queen's Education Society का judgment था, it looks like कि उसमें
प्रॉफिट इज नॉट अ सिन, प्रॉफिट कोई अपराध नहीं है ऐसी इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये बात जो लोक शिक्षण ट्रस्ट LST जो लोक शिक्षण ट्रस्ट है, पुराना जजमेंट है, काफी पुराना जजमेंट है, और उसमें क्वींस जजमेंट में उन्होंने जस्टिस बेग को भी इसमें कोट किया है। लेकिन अब ये निष्कर्ष निकलता है, हम ये कह सकते हैं कि क्वींस जजमेंट टोटली रिवर्स नहीं हुआ है, मे बी solely की definition को modify किया है, but we will have to take a view which is accepted by the department and which is subsequently accepted by the courts also. But it looks like कि profit की या surplus की बात को deny नहीं किया है इन्होंने। I can read out the relevant portion which says, at the same time where surplus accrues, I am reading exact wordings from the judgment, at the same time where surplus accrues in a given year or set of years per se, it is not a bar provided such surplus is generated in the course of providing education or educational activities. But friends, when we will discuss another judgment, the judgment of Ahmedabad Urban, it has its impact or influence on the other judgment also, and at least the department will take their view which is driven or influenced by the observations contained in Ahmedabad Urban judgment. Therefore, we will have to be careful about the quantum of surplus. That is important. So surplus is possible, but the quantum of surplus will become a issue of debate. So second issue is this, that surplus is allowed provided it is in the course of imparting or facilitating the imparting of education. Other activities तो allowed ही नहीं है, उनके होते ही तो आप चैरिटेबल से बाहर हो जाएंगे, टोटल एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा. So that is the second issue. Now the third issue before the Honorable Supreme Court was, because in Andhra Pradesh High Court judgment, what happened? Andhra Pradesh Charitable Trust Act में registration नहीं कराया था उस particular जो न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी है, और न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सामने कहा कि देखिए साहब, इनकम टैक्स एक्ट अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड एक्ट है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको किसी लोकल लॉ को कंप्लाई करना जरूरी है, इसलिए इस लॉ को कंप्लायंस करने या ना करने का कोई इम्पैक्ट हमारे एग्जम्पशन के क्लेम पर नहीं पड़ना चाहिए. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. You cannot take the shelter of one law to defeat the another law. Another law requires you to get itself registered under that law. आप ये कह करके नहीं, आपने इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे. इट वाज नॉट एक्सेप्टेड. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट सेड दैट इट इज नेसेसरी कि आप वो जजमेंट आप वहां रजिस्टर कराएं. अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो दिस in itself will become a condition for denial of exemption under section 1023(c)(6). Therefore, friends, all those institutions which are not registered under Rajasthan Public Trust Act 1959, they must get themselves registered not only for 1023(c)(6) purposes, but I feel for section 11 exemption also, because section 12(a)(b) subsection 1 clause B requires compliance of such conditions of any other law which are material for achieving the objects. ये एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट अब सेक्शन 12 कैपिटल AB में है, और 12AB के लिए वहां पर इसकी नॉन कंप्लायंस की वजह से या तो एट द थ्रेशोल्ड रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा, और अगर ग्रांट हो गया तो सब्सिक्वेंटली विड्रॉ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट. तो हमें अब ये बात समझ में आ रही है कि हमें ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा. और फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी के लिए, in one of the judgments which our office had argued and which went by way of appeal before the Honorable Rajasthan High Court, department took it before the Rajasthan High Court. That was the departmental appeal was dismissed. That was Tejkaran Surajbhai Dandiya Charitable Trust, in which Rajasthan High Court had held that there is no compulsion for the purpose of exemption under the Income Tax Act to get that particular trust registered under the Rajasthan Public Trust Act 1959. But now the situation is totally changed, and the law finally emerges is that it will have to be registered under the Rajasthan Public Trust Act 1959. For all types of services. Or other, or Even society, section
Yes, it will be applicable because Rajasthan Public Trust Act requires registration not only of trusts, it requires registration of all the entities which are carrying out charitable activities, whether that is a society or whether even that is a section 8 or the earlier section 25 company. So all these societies registered. no, but that is again required to be registered under the Charitable Trust Act. Rajasthan double registration. Because Rajasthan Public Trust Act 1959, probably section 16 and 17 of RPT 1959, my understanding is that it is required to be registered and we have to be double careful after this judgment. So wherever there are any such lapses, let us take care and let us get ourselves registered under the relevant act, and we can very well say that new noble judgment is prospectively applicable. So पुरानी वजह से हमारा withdrawal नहीं होना चाहिए. That is what for incidental activity separate books of accounts. Yes, for incidental activities, separate books of accounts are also required. Naresh ji has drawn the attention. Supreme Court says that the incidental activities like transportation, like hostel, like bookstore, all these three are three different incidental activities, and separate books of accounts are required to be maintained, means separately. You cannot have the books of accounts common for school or college, merged all these three activities there. You will have to keep a bookstore, books of accounts separate, separate trial balance, separate balance sheet, P&L, transportation, hostel, all these have to be separately maintained. Thank you, Naresh ji. Now, friends, the queries we can discuss at the end. There is no issue. Now, friends, next judgment, which is again important not only for the charitable entities which are carrying on the GPU activities, any other object of general public utility, but also for educational institutions. Now, friends, this proviso, I hope everyone has understood. General purpose utility, any other object of general public utility. The issue is because a lot of commercial activities are carried on by such type of entities. And the law which has developed over the years is strict against such entities. So they are allowed exemption with in a very restrictive manner. Now, first thing is they are not allowed to engage in any trade, commerce or business. That is one thing. But in a limited way, they are allowed to engage itself in trade, commerce or business. Trade, commerce or business, जो इन्होंने define किया है, first it should be in the course of carrying out that activity. So in the course of carrying out that activity, मतलब मैं धर्मशाला चला रहा हूँ, तो in the course of running the धर्मशाला, जो भी activities जरूरी हैं, only those I can. ये सब debate का मसला होगा, and we should know that in the course of carrying out that object versus incidental to that object, इन दोनों में फर्क है. Incidental probably larger है scope, but in the course of carrying out that activity वो narrower है. For example, धर्मशाला में चला रहा हूँ और मैंने क्या करा कि जैसे मैं बच्चों के लिए बस चला रहा हूँ कि उनके घर से बच्चों को स्कूल तक बस में लेकर के आ रहा हूँ, वैसे ही मैंने क्या करा कि धर्मशाला की बसेस भी चला दी कि स्टेशन से यात्रियों को ले आऊं और छोड़ दूं. मुझे लगता है it may be incidental, but it is not in the course of carrying out the activity of running the dharamshala. But again, I am saying a lot of debate and disputes will arise, or believe me, friends, department is going to take very different interpretation of this judgment. और जैसा मैं कह सकता हूँ, नित्यानंद जी, आप समझ सकते हो कि जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, डिपार्टमेंट ने अपने हथियारों पे धार लगाना शुरू कर दिया है. उन्हें समझ में आ गया है कि ये जजमेंट उनके लिए बाँछें खिलाने वाला है, और इस जजमेंट के भरोसे अब वो बहुत सारे एक्शंस लेने वाले हैं. उन्होंने इसका कोई एक SOP भी फ्रेम करना शुरू कर दिया है फॉर द गाइडेंस ऑफ देयर ऑफिसर्स. सो दिस इज गोइंग टू बी वन. नाउ फ्रेंड्स, अभी तक व्हाट इज ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस, दैट वाज द मेन इशू. मतलब अभी तक जो प्रोविजो है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगेजिंग इन ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस. अभी तक अगेन लाइक क्वींस एजुकेशन सोसाइटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए थी,
टू वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, एक तो सी इंस्टीट्यूट का ही जजमेंट था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जजमेंट था, वेयर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये मैटर आया कि क्या इंस्टीट्यूट इज एंगेज्ड इन ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस। और दूसरा जजमेंट था इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रगति मैदान के अंदर ट्रेड फेयर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, वो जजमेंट भी था। दोनों जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के सामने थे और दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एट पैरा 33 ऑफ दैट जजमेंट उन्होंने ये कहा था कि ट्रेड ऑफ कॉमर्स का मतलब ये देयर शुड बी इनफ एविडेंस एंड मटेरियल टू सजेस्ट that such activities have been carried out on the sound principles of business. Sound principles of business पे अगर वो activities carry on हो रही हैं, तब जाकर के वो कहा जा सकता है sound and recognized business principles. And this is the phrase the Delhi High Court has used. Sound and recognized business principles, and that should also be for reasonably consistent period. Those should be pursued, what you say, with some continuity. ऐसा नहीं है कि किसी एक साल में किसी वजह से प्रॉफिट हो गया और आप ये कहने लग जाओ कि वो ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस में। तो अब सवाल आता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो जजमेंट अब तक चल रहा था और उसकी वजह से पर्टिकुलरली सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, जो पर्टिकुलरली प्रगति मैदान में जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, जयपुर में भी मैंने जो बताया कि इन दिनों जो जयपुर में ट्रेड फेयर चल रहा है स्टोन मार्ट के नाम से या क्या है वो स्टोनेक्स के नाम से, उनको भी बहुत सारा सरप्लस होने वाला है, हो सकता है, आई एम नॉट अवेयर। ये सब लोग इन स्पाइट ऑफ ह्यूज सरप्लस बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन सी इंस्टीट्यूट एंड इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, दे वर अलाउड एग्जम्पशन बिकॉज these were not run on the sound and recognized business principles. Now, what was meant by sound and recognized business principles? Sound and recognized business principle का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के सामने एक धर्मशाला है। आई डोंट नो आप में से कितनों ने नोटिस किया है। मान लीजिए वो धर्मशाला का मैनेजमेंट ये कर रहा है कि आसपास किसी भी होटल में जो कमरे की फैसिलिटी उस धर्मशाला में है, लाइक एयर कंडीशन, एयर कूल्ड और नॉन एसी, नॉन एयर कूल्ड, वो जो रूम दूसरे किसी कमर्शियल होटल में मिल रहा है उससे 30% लेस में वो धर्मशाला देती है, नंबर वन। नंबर टू, वो धर्मशाला केवल उन्हीं लोगों को देती है जो इलाज कराने एसएमएस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि although there is surplus, but they are not running their activities on the sound and recognized business principles, because sound and recognized business principles का मतलब ये है maximization of profit। जब मेरा पड़ोसी होटल मेरे से ज्यादा कमा सकता है तो मैं क्यों 30% या 40% कम पे लूं? और मुझे क्या पड़ी है कि मैं ठहरने वाले से पूछूं या एविडेंस मांगूं कि आपका कोई मरीज है या आप अपने आप को दिखाने आए हो तो यहाँ ठहर सकते हो। अगर वो कहेगी नहीं था मैं तो शादी में आया हूँ या मैं जयपुर घूमने आया हूँ, तो मैं उसको मना कर दूं कि नहीं, आप चाहे पैसे दोगे लेकिन मैं आपको ठहरने नहीं दूंगा। So hitherto, because of these two judgments of Delhi High Court and similarly certain other judgments and lot of other judgments including Rajasthan High Court judgment, देखिए जो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जजमेंट है, ये जजमेंट में डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया था, क्योंकि डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, उसमें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट भी था, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का गुजरात हाई कोर्ट का था, और बहुत सारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटीज, उनके भी जजमेंट्स थे। सो ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स थे और इन जजमेंट्स के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि इसको आर्ग्यू भी बड़े बड़े विद्वान वकीलों ने आर्ग्यू किया था, जिसमें हरीश साल्वे थे, अरविंद दातार थे, अजय वोरा थे, मेरे ख्याल से साउथ के भी दो तीन, अरविंद दातार के अलावा भी कुछ। सो in spite of all these stalwarts, they could not convince the courts, और कोर्ट ने ये साउंड एंड रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस प्रिंसिपल की थ्योरी को बंद कर दिया और उन्होंने नया प्रिंसिपल इजाद कर दिया टू डिसाइड व्हाट इज मेंट बाय एंगेजिंग इन ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, उन्होंने नई थ्योरी क्या इजाद की। उन्होंने कहा कि अगर आप कॉस्ट बेसिस पे रिकवरी कर रहे हो या मार्जिनल
markup on cost कर रहे हो तो you are not engaged in trade commerce and business. But if it is significant or substantial markup over the cost, then you are engaged in trade commerce or business. जैसे अभी अपन ने धर्मशाला वाले एग्जांपल में देखा, उसका मार्कअप नॉमिनल नहीं है, उसका मार्कअप मे बी सिग्निफिकेंट है, बट साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि वो जो कमरा 1000 रुपए में उसका पड़ोसी होटल दे रहा है वो 700 रुपए में दे रहा है या 600 रुपए में दे रहा है, लेकिन 600 रुपए में भी उसकी कॉस्ट का सब्सटेंशियल मार्कअप है. तो पुराने प्रिंसिपल्स के हिसाब से तो ये ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस नहीं था, नए प्रिंसिपल के हिसाब से ये ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस है. अगर कोई गौशाला ये कहे कि भाई राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो सरस का दूध जिस रेट पे आ रहा है मैं भी उसी रेट पे बेच रहा हूँ या उससे 10% कम पे बेच रहा हूँ, तो भी सरप्लस तो हो रहा है उसको. Now therefore this new principle has become very will be a bone of contention, and lot of debate would arise between the department and assessees. The department would always tend to say that whatever markup you are adding is not nominal, it is substantial or significant. The assessees would always say, because there is no quantitative measurement which is available even through this judgment of the Honorable Supreme Court, that this percentage would be considered as nominal markup and above that will be considered as a significant markup. Then there would be debate about what is cost. Cost को कुछ उन्होंने define किया सुप्रीम कोर्ट ने. Cost को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो define किया है, that is probably para page 109 पे है, that is para so probably this para 188. They say if in the course of its functioning it collects fees or any other consideration that merely covers its expenditure, including administrative and other costs, plus a small proportion of provision, such amounts are not considered towards trade, commerce or business or services in relation thereto. So the first major departure from the earlier views of different high courts. No view was available of the Supreme Court in this regard earlier, unlike the Queen's Education Society or the American Hotels Association. No view was available. For the first time, any other object of general public utility के लिए जो trade, commerce or business है, what will tantamount or what will mean by engaging in trade, commerce and business, the principle laid down by Supreme Court is if you are recovering anything above cost which is a significant or substantial markup, that is trade, commerce or business per se. बस ये होते ही तो वो trade, commerce और business हो गया, और तब आप उस 20% से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि trade, commerce और business allowed है. Trade, commerce और business GPU entities को allowed है. कौन-कौन सी दो conditions के लिए? That first it should be in the course of their carrying out their objects. It should not be incidental, but in the course of carrying out the objects. और second है कि 20% से ज्यादा रिसीट नहीं होनी चाहिए. अगर 20% से ज्यादा रिसीट हो गई तो फिर आपको वो टोटल वॉयलेटिव हो जाएगा, एंड देन यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल पर्पस. यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ सेक्शन 215 एंड देन सेक्शन 11 का बेनिफिट लेने का आपका राइट खत्म हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. नाउ इट्स इम्प्लीकेशन ऑन एजुकेशन, बिकॉज जो पैरा 172 है उसमें उन्होंने जब ये बात रिपीट की है पैरा 172 ऑफ द ऑर्डर में, तब उन्होंने कहा है कि ये कॉस्ट का जो रेफरेंस है दैट इज विद रेफरेंस टू सेक्शन 1023 एंड सेक्शन 11 आल्सो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे न्यू नोबल केस थोड़ा लिबरल है. सरप्लस के लिए उन्होंने कहा कि सरप्लस जनरेशन पर से इन अ ईयर और सेट ऑफ ईयर्स पर से कैन नॉट बी रीजन फॉर डिनायल ऑफ, और वहां पर उन्होंने क्वांटिफिकेशन की बात की. लेकिन यहाँ जो पैरा 172 में बात की है उन्होंने विद रेफरेंस टू सेक्शन 11 भी बात की है, which will be covered for section 215 and 1023 की भी बात की है, which will cover 1023C6 also. Therefore, friends, now the department will definitely say that if the markup for charging the fees is not on cost basis, not on marginally above the cost, but it is more, matlab significantly above the cost, you are carrying on trade, commerce and business. And friends, in the New Noble Society case, the Supreme Court decision is driven by the judgment or whatever is contained in the
constitution. Friends, they have also referred by way of argument by the department that Article 21 capital A and Article 45 defines the education to be the responsibility of the state and a right of the citizens. तो उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली चैरिटी का काम है, इसको पर से कॉन्स्टिट्यूशन ने ही चैरिटी रिकॉग्नाइज किया, एजुकेशन नॉट जीपीयू, इसलिए हम इसका कमर्शियलाइजेशन अलाउ नहीं कर सकते, इसका कमर्शियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के कॉन्ट्रेरी होगा. सो द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से ड्रिवन है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. And friends, I also have one judgment which is delivered 2-3 days back only, which has nothing to do with the Income Tax Act. ये judgment भी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के judgment के अगेंस्ट था, नारायणा मेडिकल कॉलेज, which judgment is delivered as late as November 7, 2022. और उसमें भी वो मेडिकल कॉलेजेस की फीस को बढ़ाने के लिए था, लेकिन जैसे ऑडिटर डिक्टा कहते हैं उसमें जो एक लाइन है, दो लाइन है, the Supreme Court has said the education is not the business to earn profit. So the first line is the education is not the business to earn profit. Second line is the tuition fee shall always be affordable. Now department will use these two lines against all the educational institutions. Sir, we may feel frustrated, but this is the law. We will have to. We are frustrated. Significant का क्या criteria? We are frustrated with corona, but that is fact of life. हमें अपने सारे लाइफस्टाइल को अमेंड करना पड़ा कि हम कोरोना को फेस कर सकें. So it is like this is the law of the land. अब हमें इसी के साथ अपने अफेयर्स को मैनेज करना पड़ेगा. So friends, जब ये तय हो जाता है कि कमर्शियलाइजेशन अलाउ नहीं हो सकता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, तो चाहे न्यू नोबल के केस में द सुप्रीम कोर्ट इज बिट लिबरल एज कंपेयर टू अहमदाबाद अर्बन, बट अहमदाबाद अर्बन का इन्फ्लुएंस एजुकेशनल सोसाइटीज पे भी रहेगा, एंड इन दैट केस द प्रॉब्लम वुड डेफिनेटली अराइज व्हेन द फीस चार्ज इज सिग्निफिकेंटली अबव द कॉस्ट. हाउ द कॉस्ट विल बी डिटरमिन्ड, दैट इज व्हाट फैक्टर्स विल बी टेकन, एंड अभी इसके बहुत सारे इश्यूज हैं व्हिच वी आर नॉट प्रेजेंटली डिस्कसिंग, और हो सकता है कि इसके इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हो, कोर्ट्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस में ऐसा हो सकता है. Now, one very important thing for trade associations is that trade associations को definitely charitable कहा है, any other object of general public utility, लेकिन trade associations के लिए एक बड़ा adverse view सुप्रीम कोर्ट ने लिया है. And Supreme Court ने at page 144 of the judgment, Supreme Court ने कहा है कि such trade bodies like FICCI, CII or a lot of trade associations, Rajasthan Chamber of Commerce and Industries, they have said that if those trade associations are advocating, coordinating or assisting the trade associations, then it is charitable. Anything more than these three, that is any other services over and above advocating, coordinating or assisting, again lot of debate would be there, those will not be any other object of general public utility, and those will be per se treated as trade, commerce or business, whether marginal cost or no marginal cost. Those per se will be treated as trade, commerce or business, and they have specifically said कि अगर आप ट्रेड एसोसिएशन हैं और स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कोई फीस लेकर के स्किल डेवलपमेंट की कार्रवाई करते हैं, आप ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उन ट्रेड फेयर्स में लेट आउट करते हैं स्पेस फॉर द ट्रेड बॉडीज, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स और पार्टिसिपेट इन द ट्रेड फेयर, that will tantamount to not the core activity of the trade association, that will be treated as a additional service, and in that case that will be treated as trade, commerce or business, and then 20% quantitative restriction would apply. इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेड एसोसिएशन कोई ट्रेड शो ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें अगर 100 बूथ वहां तैयार की हैं, तो 80 बूथ तो डेफिनेटली वो कॉस्ट या स्लाइटली अबव कॉस्ट पे अलॉट करे,
20% को वो significantly above cost पे दे सकता है, because trade, commerce and business to the extent of 20% of the total receipt is allowed. It is in the course of carrying out the object, that is allowed. So cross subsidizing is possible, but all these are going to create a lot of interpretational issues. Rajasthan Cricket Association was also before the Supreme Court, but interestingly, Supreme Court ने in cricket associations के against बहुत adverse view नहीं लिया है, and the matter, instead of deciding by the Supreme Court, that is sent back to the assessing officer. So there will be second inning of the litigation in respect of all the cricket associations. Cricket associations का एक argument ये था कि जो Board of Control for Cricket in India, BCCI से उन्हें पैसा मिलता है, BCCI को पैसा मिलता है TV rights and so many other things का, advertisements का, उसका जो share मिलता है, that is a capital receipt. वो capital receipt है, वो revenue receipt है ही नहीं. This was the argument. और वैसे तो जो different high courts ने, गुजरात high court, राजस्थान high court, उन सब ने कहा था कि it is not trade, commerce or business. Surplus in itself cannot be a criteria to decide any activity to be trade, commerce or business. That was, as a prudent businessman, recognized principle of business type things थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नए सिरे से एग्जामिन करने के लिए असेसिंग ऑफिसर्स को भेजा है कि क्या वो वास्तव में कैपिटल रिसीट है. So the new round of litigation would start, but at least as on today, nothing adverse is viewed by the Supreme Court as is viewed against the educational institutions or any other institutions carrying GPU activities. So friends, these GPU activities I have discussed. So charging anything is no sin. GPU associations can definitely charge for any goods or services they are rendering, but that charging should be on cost basis or a marginal markup over the cost. Friends, probably my time is over. We can keep on discussing the judgments, each para, each word, and a lot of litigation would be there, but I think the initial understanding is very important for all of us, so that we can all reorganize our affairs so that we are not caught on the wrong side of the law and the exemptions are not denied. Now we can take up the queries if at all there are certain queries. Yes. Trust is running Bhavan given on rent for marriage, etc. This GST paid under head rent. The income so received is treated as rent or received from incidental objects. Now again, this Bhavan is suppose running a marriage hall is GPU activity. Any other object of general public utility, it is covered. But the question would again arise: what is the cost they are charging? Again, the principle will be whether it is marginally above the cost or significantly above the cost. If it is significantly above the cost and that exceeds 20% quantitative restriction, then it will be not treated as carrying on charitable object, and in that case, the exemption will be denied. So when the second query, can trust maintain accounts on mercantile basis and book income accordingly? Friends, actually, this has nothing to do with the present Supreme Court judgments, but I think, yes, the trust can maintain its accounts on mercantile basis. Nothing, the law does not debar. Can trust give loan for self-employment of needy people with interest and without interest? Sure. Advancing loan to needy people for uplifting their life is any other object of general public utility. ये जो self help groups हैं, जो micro finance वाले self help groups हैं, उनको charitable activities कहा गया है. इसमें कोई problem नहीं है. But again, what is the rate of interest? What is the cost of their funds and what is the interest they are charging? What is the spread available? All those things will be examined. How do you see the taxability in future on trust without having charitable nature and non-related parties to the trust? Now, the future is very bleak of the trust, I can say. और friends, मेरा मानना ये है कि particularly, although Supreme Court admits that education is the responsibility of the state, but unfortunately, state is not able to provide education. Therefore, मैं जयपुर में कोई नया सरकारी स्कूल खुलते हुए नहीं देखता हूँ. मैं देखता हूँ कि probably दरबार स्कूल बंद हो गया या खुददार स्कूल की हालत ऐसी हो गई. कोई नया स्कूल नहीं खुल रहा है. लेकिन इन सब जजमेंट्स के बाद मुझे लगता है कि इस फॉर्म में जो चैरिटेबल ट्रस्ट
significant educational services provide कर रहे थे society को. I know सुबोध शिक्षण संस्थान या महावीर या महेश्वरी जो जयपुर में है, वो इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन सब को डिसइंसेंटिव मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट, एंड द इन्वेस्टमेंट थ्रू these trusts in this sector or the activities of these trusts in expanding the education would be adversely affected. Now, can we treat cost center, activity center instead of maintaining separate books? Probably better courses maintain separate books because the law requires maintaining separate books. The tax authorities would not be happy demonstrating that what is achieved through maintaining separate set of books is achieved by maintaining separate cost center. That is not their way of understanding the things. Therefore, better maintain separate books of account. A society registered under Societies Act and not collecting donations then should get registered under Public Trust Act. Yes, the all societies which are carrying charitable purposes, whether receiving donation or no donation, is no condition. So carrying out charitable activities is a must. They must get themselves registered. Otherwise, they will face problem in getting registration under 12A. Should it be construed that now educational institutions can cover cost only and not for expansion of institutions? Looks like, because they say a nominal provision. I don't know what way they have used the word. Supreme Court has used the word a nominal provision. ऐसा लगता है कि शायद कोई हाई कोर्ट बाद में ये कहे कि नॉमिनल प्रोविजन फॉर एक्सपेंशन, लेकिन वो भी बहुत नॉमिनल होगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारा एडवर्स व्यू अवेलेबल रहेगा और डिपार्टमेंट इसको टूथ एंड नेल अपोज करेगा. देयरफॉर फॉर टाइम बीइंग ये मान के चलिए कि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू फंड दी चैरिटी वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्वींस जजमेंट में उन्होंने जब ये कहा था कि अगर आप सरप्लस एजुकेशन के लिए डिप्लॉय कर रहे हो तो दैट इज गुड, बट इस वाले जजमेंट में इन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा दैट लॉ that surplus to fund the charity is reasonable, that law is no more holding good. तो अब ये समस्याएं आने वाली हैं. Friends, thank you very much for joining us. Some people have come. देवस्थान विभाग एंटरटेन ही नहीं करेगा सोसाइटी. देखिए, lot of difficulties I know would be faced. We will find answers. We will get something written from them that they are not registering us. Probably that will help us. But let us not stop trying getting ourselves registered there. We must make application. Let the application be rejected on this ground like that. अभी देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, पर्टिकुलरली कॉस्ट को लेकर के काफी दिक्कतें आने वाली हैं. लेट अस सी व्हाट सॉल्यूशंस डू इमर्ज इन टाइम टू कम, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट सम reasonable interpretation would be there of this particular judgment by different tribunals or the high courts. लेकिन वो समय बताएगा और उसमें बहुत समय लग जाएगा लिटिगेशन को वहां तक ट्रैवल करने में. Okay, friends, thank you very much for joining. Thank you very much from my side. Thank you very much, Nishita ji. And any other queries, you are free to write to us, or you may contact Naresh ji. You can mail your queries. We would be too happy to respond to those queries. Thank you very much. Sir, for enlightening us with such important decision by the Supreme Court. I hope this seminar provides some value additions to our case. In the end, I would like to give show my sincere gratitude to all our guests for their presence and contribution to make this session a great success. Thank you for joining us today and hope to see you next time. पहला तो देखिए